हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू madeeasy गेट सोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल ब्रांच। जितना देखो क्वेश्चन बच्चों के थ्रू मिल पाया है उस हिसाब से अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं और मैथमेटिक्स के मेरे पास 5 क्वेश्चन मिले हैं एंड क्वेश्चन आर सो मॉडरेट। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जो क्लास कंटेंट से बाहर है। जो हमेशा मैं बोलता हूं क्लास में कि गेट में रेयर चांस है कि क्वेश्चन आपका क्लास कंटेंट से बाहर जाएगा और वैसा ही है। अगर आपने क्लास हमारी अटेंड की होगी तो आपको मिलेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने क्लास में नहीं कराई है। इनफैक्ट वो बाकी टीचरों से जो हमने बात की है उनका भी कहना है कि पेपर यू कैन से इज अ काइंड ऑफ मॉडरेट, नॉट टफ, मतलब मॉडरेट और कह सकते हैं कि थोड़ा इजी साइड पेपर है ना, डिफिकल्ट पेपर नहीं है जो बाकी सब्जेक्ट का जो एनालिसिस आया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग जरा देख लेते हैं जो मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आया हुआ है उसके क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है वो एक न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है ना। उसने बोला है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए और बाकी फिर करना है इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से। ये इसका सोल्यूशन मांग रहे हैं। अब अगर देखो बात करें इसके सोल्यूशन का तो देखो इसका अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो उसका सोल्यूशन क्या है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर करते हैं 0 से 4 है ना, एंड इट इज dx अपॉन कह सकते हैं इट इज 1 प्लस एक्स है, तो बेसिकली इट इज ln 1 प्लस एक्स है और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से कहां तक है 4 तक, तो 4 वैल्यू क्या हो जाएगा ln 5 और 0 पे वैल्यू कितना हो जाएगा 1 पे वैल्यू 0, तो ये हो गया ln 5 डायरेक्ट मेथड से। फिर उसने बोला है कि बाई ट्रेपेजॉइडल करना है और ट्रेपेजॉइडल में इंटरवल क्या लेना है 1 का इंटरवल लेना, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। y का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो देखो अगर हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, देन 3 है और देन हमारे पास क्या है 4 है। तो इस पे 0 पे वैल्यू देखो तो कितना है 1 पर वैल्यू कितना 1/2, 2 पर वैल्यू 1/3, इट इज 1/4 एंड 4 पे वैल्यू है 1/5 और इसको लिख देते हैं इट इज y0, दिस इज y1 एंड दिस इज y2 एंड दिस इज y3 एंड दिस वन इज y4। ये है हमारे पास। अब अगर इसका सोल्यूशन लिखते हैं, अगर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं बाय ट्रेपेजॉइडल रूल से, इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा इट इज h/2 क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग टर्म दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना। तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा h का वैल्यू 1/2, h का वैल्यू 1 है, y0 का मतलब 1 अपॉन 1/5 प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है ना। सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1.6853। ये वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा हुआ है दैट इज m माइनस n डायरेक्ट है और m न्यूमेरिकल मेथड से है और ln 5 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा m माइनस n दैट इज 1 पॉइंट, जो इसका एक्चुअल आंसर है दैट इज 1.6833 माइनस ln 5। यूज द कैलकुलेटर गेट द आंसर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बेसिकली रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। और रीजन क्या दिया है, एक देखो दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका रीजन बनाते हैं इस क्वेश्चन में तो क्या दिया है, एक रीजन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ है। इनफैक्ट एक लाइन दिया हुआ x इक्वल टू 2 का, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 2 का और एक दिया हुआ x एक्सिस। सो इससे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो रीजन हमारा ये है रीजन, दिस इज द रीजन व्हिच इज गोइंग टू बी बाउंड और इस रीजन पर इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं इसको डील करने के लिए अगर मैं ले लेता हूं वर्टिकल स्ट्रिप तो यहां पर y का वैल्यू क्या है हमारा 0 और यहां y का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा y का वैल्यू 0 से लेके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और x का लिमिट हो जाएगा 0 से लेके x इक्वल टू 2 और है फंक्शन क्या y। अब ये हो जाएगा dy dx। तो पहले y का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेके एक्स स्क्वायर बाई 4 dx और x का वैल्यू हो गया 0 से लेके 2 और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा x का वैल्यू 0 से लेके 2 और हमारे पास ये कितना आ रहा है, हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर 4 बाई 32 और इंटीग्रेट कर दो dx तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 5 बाई 5 इंटू 32। लिमिट है 0 से 2, 0 से 2 में हो जाएगा ये 2 की पावर 5 32, 32 से 32 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/5। द आंसर इज 1/5। क्लियर है।
नो प्रोडक्शन क्वेश्चन लोग बता रहे हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत लोग नहीं किए होंगे, पर ये आप चेक करिएगा, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इट इज डेल वाई बाई डेल एक्स है और ये हमारा है डेल वाई बाई डेल टी। बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो बेसिकली इसमें देखोगे तो y जो है वो फंक्शन है किसका, x और t का। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और जिसमें x खुद फंक्शन है x का और t फंक्शन किसका है, t का है। ये है क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारे पास y x और t का फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। इट इज डेल y बाई क्या करेंगे, डेल x, ये क्या हो जाएगा x डैश t, एंड डेल y बाई डेल t करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू टी डैश। इन दोनों का वैल्यू उठा के मेन इक्वेशन पुट कर देंगे। डेल y बाई डेल x का वैल्यू इट इज x डैश t, और डेल y बाई डेल x दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये हो जाएगा x t डैश, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज प्लस x t, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास देखो आ गया x डैश t इज इक्वल टू, आप x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3t डैश प्लस t। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3t डैश प्लस t डिवाइडेड बाई t, एंड लेट्स से दैट इज इक्वल टू k। तो देखो हमारे पास यहां से एक आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू kx, और यहां से रूट हमारे पास आ गया m का वैल्यू k। तो सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू c1 e टू द पावर kx। दूसरा हमारे पास क्या है, इट इज 3t डैश प्लस t डिवाइडेड बाई t इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 3t डैश प्लस t कॉमन है 1 माइनस k है ना, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t डैश प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाई 3 इंटू t, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसका रूट हो जाएगा m का वैल्यू 1 माइनस k डिवाइड बाई 3। तो सोल्यूशन इसका आ जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास देखो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा बेसिकली T2 का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, T2 इक्वल टू हो जाएगा इट इज C2 e टू द पावर 1 माइनस, बेसिकली ये रूट हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 माइनस के टी बाई 3। तो बेसिकली हो जाएगा C2 e टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी। अब देखो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू x इंटू टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया C1 e टू द पावर kx और C2 e टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी। और आप देखोगे तो y फंक्शन है x और t का, और एक बाउंड्री कंडीशन दिया इसमें, आप चेक करो तो दिया हुआ है y x कामा 0 पर वैल्यू। तो बेसिकली ये वैल्यू 0 हो गया तो यह आ जाएगा C1 e टू द पावर kx एंड दैट इज इक्वल टू 10 e टू द पावर दिया हुआ है माइनस 2x। कंपेयर करेंगे C1 का वैल्यू आ रहा है 10 और k का वैल्यू आ गया कितना, माइनस 2। सो कंप्लीट सोल्यूशन वी कैन राइट yx फंक्शन ऑफ t दैट इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस 2x माइनस 3 इज द आंसर। और ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कराया हुआ है, क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा है, लैप्लास का sin 2t इंटू sin 4t का लैप्लास। तो लैप्लास ऑफ sin 2t इंटू sin 4t, पहले इसको ब्रेक कर लो, sin a इंटू sin b दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज 1/2 cos ऑफ a माइनस b। बेसिकली ये आ जाएगा cos ऑफ 2t माइनस 4t दैट इज माइनस 2t प्लस, प्लस नहीं माइनस में माइनस 2t हो गया, माइनस क्या हो जाएगा cos 2a प्लस b दैट इज 60। सो बेसिकली इसको लिख सकते हैं, इट इज 1/2 ब्रैकेट में cos क्या हो जाएगा, ये केवल cos 2t माइनस cos ऑफ 60। तो इसका लैप्लास निकाल लो, तो लैप्लास निकालोगे तो 1/2 ही रहेगा, और इसका लैप्लास हमारे पास कितना है, cos 2t का लैप्लास इट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल लैप्लास, राइट। नेक्स्ट देखो देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो अभी तक हमको मिला हुआ है, उसमें पूछा कि न्यूटन रैप्शन जो है इज द मेथड बेस्ड ऑन, बेसिकली न्यूटन रैप्शन का मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन टेलर सीरीज। टेलर सीरीज के फर्स्ट दो टर्म को लेके अप्रोक्सीमेट करके उसके आंसर आते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो दैट इज क्या है, टेलर सीरीज है। सो अभी तक जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल पाए हैं, दिस इज ऑल फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और आई होप कि सबके सारे आंसर बिल्कुल सही होंगे इस क्वेश्चन में। वेरी नाइस। एंड अगर कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट होगा डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट मी विद द टेलीग्राम। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन, एंड नेक्स्ट सोल्यूशन इज ऑफ थियरी ऑफ मशीन। ऑब्वियसली अमित कक्कर सर इज अबाउट टू कम।
Okay. So friends, we are here for the term questions in GATE, mechanical as well as heat transfer question. उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है. Yeah. ठीक है. तो we two are here. तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व आपके लिए सॉल्व करके लाए हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को. और जितना मेमोरी बेस्ड डेटा हमारे पास आ सकता था, बेस्ड ऑन दैट डेटा वी हैव सॉल्व्ड इन वेरी वेरी एफिशिएंट मैनर. सी, ये वॉल है, दिस इज द फ्लोर. यहां पर एक हमारी लाइक अ रॉड, लाइक अ लैडर है. राइट, दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री. राइट, पॉइंट ए की दिस रॉड इज गोइंग टू स्लाइड. पॉइंट ए की वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी, एंड पॉइंट जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी रॉड. अब इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं. हम रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम से भी कर सकते हैं, हम आई सेंटर से भी प्लॉट करके कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट ए एंड बी दे आर गोइंग टू बी वर्किंग एज इमेजिनरी स्लाइडर. तो अगर मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम से करता हूं, एक हमने पॉइंट ओ लिया, सबसे पहले ए की वेलोसिटी प्लॉट करी. अब ए की वेलोसिटी अगर हम लोग बैक उस पर जाते हैं तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखिएगा वी हमें नोन है, तो ये हमारा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब ए के रिस्पेक्ट में मैं अगेन बैक जा रहा हूं. ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बी का मोशन देखें, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन में होगा, और बी का मोशन जब हम फ्लोर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस लाइन में होगा. राइट, तो अब यही चीज अगर हम लोग यहां देखें, ए के रिस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी होगी वो ए बी लेंथ के परपेंडिकुलर इस लाइन में आएगी, और फिक्स के रिस्पेक्ट में इस लाइन में आएगी. तो ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां बी मिलेगा. अब इस ए बी का ही मिड पॉइंट पे जी था, तो यहां पर भी जी बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, सेम डिवीजन रेशियो में करेगा. ये एंगल 45 गिवन है, अगर आप देख सकते हैं तो ये दोनों एंगल हमारे 45 होंगे. ये 45 है तो 90, ये भी 45 हो जाएगा. सिंपल सी बात है. इसमें हम लोग अगर देखें इस ट्राइंगल में देखिए, sin 45 इज इक्वल टू VG डिवाइड बाय VA, एंड VA इज गिवन एज 6 मीटर पर सेकंड. तो VG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 sin 45. अब 6 sin 45 अगर हम निकालें 6/√2 दैट इज 4.24 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसको हम लोग आई सेंटर से भी कर सकते हैं. आई सेंटर से तो आई गेस बिल्कुल प्रीटी स्ट्रेट है. हाँ. अगर आप ड्रॉ करोगे इसके परपेंडिकुलर, यस, यहाँ से कैन यू राइट? ओके, आई गेस दिस इज ब्लैक. हाउ कैन आई चूज? ओके, so आई सेंटर I guess. Okay, it's working now. How do I undo this? Okay, anyway, so if you draw the perpendiculars, it's so easy that 45. So it is obvious that it would be 90 degree. You know, you can apply simple mathematics. Simple 1 line job है. Now, if it is 90 degree, you can understand that to apply that principle in which, you know, any particle would have the same velocity along its length. Otherwise, the length cannot remain constant. So, this point will have the velocity into this direction only, and this would be VA cos 45. It would be simply same, 4.24. So, I hope हम लोगों का ये yes. So, just wait for a minute. हम लोग नोट पे, अरे नो. Yes, इस पे. Where to go to the next question? Try. Just wait a moment. इससे अगला पार्ट आ रहा था. It's not like. Now, so the next question हम लोगों का है, damping coefficient was given. Damping coefficient was given 35 Newton per meter per second, right? And critical damping coefficient भी given है CCB. Find the logarithmic decrement. तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं जो damping factor होता है, जिसको हम damping ratio भी बोलते हैं, zeta C/cc होता है. So 35/350 that is 0.1. और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? 2 पाई जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ जीटा 0.1 यू विल गेट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट 0.6314. सो दिस इज द आंसर फॉर द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. सो नाउ बच्चों, ये हीट ट्रांसफर में फिन का क्वेश्चन आया. एक लॉन्ग फिन है. लॉन्ग फिन का आप लोग हीट ट्रांसफर जानते हैं, √HP K AC इंटू थीटा बी. थीटा बी इज टेम्परेचर डिफरेंस, TB माइनस T इंफिनिटी, आप जानते हो. उसने क्या किया, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की करी और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की करी.
एच और के सेम है, गिवन था प्रॉब्लम में एच और के सेम है, और ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में जो लेंथ दे रखी थी, स्क्वायर लेंथ, वो हमारी ए दे रखी थी। तो बच्चों इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4a, दैट मींस 4d, और इस ए की वैल्यू डायमीटर की इक्वल थी, राइट। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था दैट इज ए स्क्वायर मींस डी स्क्वायर, राइट। फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका पेरीमीटर पाई डी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले, जो रेशियो पूछा गया था कि इसमें हीट ट्रांसफर और इस वाले क्रॉस सेक्शन में हीट ट्रांसफर Q1 बाई Q2 क्या होगा, तो अगर हम बोले तो अंडर रूट एच पी के ए सी स्क्वायर वाला लेंगे इंटू थीटा बी अपॉन अंडर रूट एच पी के ए सी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का इंटू थीटा बी कैंसिल हो गया, एच और के कैंसिल हो गए बिकॉज दे वर सेम। अब इसका पेरीमीटर क्या था 4d और एसी क्या था डी स्क्वायर, और सर्कुलर वाले का पेरीमीटर क्या था पाई डी और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो अगर इसको कैंसिल करें तो अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन पाई स्क्वायर, सो इफ यू टेक आउटसाइड फ्रॉम द रूट दैट इज 4 अपॉन पाई। तो ये दोनों का जो हीट ट्रांसफर का रेशियो था स्क्वायर क्रॉस सेक्शन फिन टू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फिन दैट वाज कमिंग 4 बाई पाई। ये क्वेश्चन आया गियर ट्रेन में। गियर ट्रेन का क्वेश्चन था, एक सिंपल सी गियर ट्रेन उसने बना रखी थी, इट्स अ बेसिकली कंपाउंड गियर ट्रेन। उसने पूछा था विच गियर इज अ आइडलर गियर। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट बताया था, जो गियर लेफ्ट और राइट दोनों कनेक्ट करता है वो आइडलर होता है, द गियर विच इज कनेक्टिंग लेफ्ट ऑल्सो एंड राइट ऑल्सो, बिकॉज जब आप लॉ ऑफ गियरिंग लगाते हैं तो उसके टीथ कैंसिल हो जाते हैं। सर 1 is connecting only right but not the left, 2 is connecting only left but not right, 3 is only connecting right side to the gear but not left, 4 एक ऐसा गियर है जो लेफ्ट भी कनेक्ट कर रहा है 3 से और राइट भी कनेक्ट कर रहा है 5 से। तो 4 गियर इज द गियर विच इज अ आइडलर गियर। और आप लोगों को मालूम है इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों की वर्कबुक में भी था जब आप लोगों ने सॉल्व किया था, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका 2015 if I'm not wrong. हाँ, Or I think. you can calculate the velocity ratio also, you won't find any impact of number of teeth of gear number 4. नाउ सो वी विल बी मूविंग टू दिस पार्ट। ये अगेन एक हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आया। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, दो प्लेट्स हैं जिनके टेम्परेचर T1 और T2 है, बीच में फ्लूइड है, फ्लूइड का टेम्परेचर T3 है। उससे बोला था कौन सा टेम्परेचर किससे ज्यादा होगा। अब आप यहां देखिए ये वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है, अगर इस प्लेट के रिस्पेक्ट में फ्लूइड ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फ्लूइड इस प्लेट के रिस्पेक्ट में क्लोज विसिनिटी में आ रहे, फ्लूइड हीट अप हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा गर्म हवा ऊपर उठती है बिकॉज ऑफ अ बायंसी इफेक्ट्स मोर डोमिनेटिंग, तो गर्म हवा ऊपर उठती है, इसका मतलब जो एयर इसके कांटेक्ट में आई वो गर्म हो गई, इसका मतलब T1 टेम्परेचर T3 से ज्यादा है, राइट। T1 टेम्परेचर T3 से ज्यादा है क्योंकि फ्लूइड अगर कोल्ड होगा तो इसकी विसिनिटी में आके हॉट होगा तभी वो ऊपर जाएगा, और इस प्लेट के रिस्पेक्ट में फ्लूइड नीचे आ रहा है, इसका मतलब ठंडी हवा नीचे आती है, इसका मतलब फ्लूइड जो प्लेट के कांटेक्ट में आ रहा है वो ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब T2 टेम्परेचर हमारा कम है T3 से, तो T2 टेम्परेचर T3 से कम है लेकिन T1 टेम्परेचर T3 से ज्यादा है, तभी यहां पर फ्लो अप साइड जा रहा है और यहां पर फ्लो इसकी विसिनिटी में डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो T1 विल बी मोर देन T3 एंड T2 विल बी लेस देन T3। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था Oh, Coriolis acceleration. So, as per the data given by the students, omega was given, velocity of sliding was given, and Coriolis. So, I guess you all must have gone through with this formula, twice of velocity of sliding into omega. So, if you put down the values pretty straight, the answer would come out as 1.2 meter per second square. You can comment in the chat box, so as to confirm your answers. I'm continuously looking into it. No. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जायरोस्कोप का क्वेश्चन था जिसमें वेलोसिटी गिवन थी 1200 किलोमीटर पर आवर, राइट। व्हीकल स्पीड गिवन थी, तो हम वी कैन मल्टीप्लाई बाय 5/18, दिस इज इन मीटर पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था 1 kg मीटर स्क्वायर, दिस विल बी मीटर स्क्वायर एक्चुअली, एंड द टर्निंग रेडियस वाज 2000 मीटर, 2 किलोमीटर। आई एम श्योर सर दिस मस्ट बी एयरक्राफ्ट, हाँ, so running at 1200 so this kilometers per hour. omega p जो टर्निंग का होता है दैट विल बी डिसाइडेड बाय v by r। यू नो वेरी वेल टर्निंग में जो प्रेसिजन होता है वो टर्निंग वेलोसिटी से होता है, तो v by r जब हम v by r करेंगे तो ये हमारा ओमेगा p टर्निंग का आ जाएगा। ओमेगा वाज 2 pi n by 60, n was given 500 rpm, so 2 pi n by 60 से this will be the omega, so the gyroscopic couple was I omega p, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into omega p, so it will be 8.723 Newton meter according to the data what we got. Guys, can you confirm the answer, this data of I? Actually, we got to know about I as 1, but can you confirm it if anybody, is there any discrepancy with this data that we have used? I we have used as 1, omega is okay, this is 500. I find this 500 is fine, or it can be around 1500 because this omega is pretty large. So based on the memory base whatever we got data, so based on that we have calculated. Yes, This is the procedure. they are answering sir, it is 1 according to them.
I. Oh, yeah. I Yeah, is one. if it I is 1, that is okay. But it's a kg meter square, please. Yeah, this square is just missing here. Now, the next question is worm gear is used in. You know very well worm gear is a spiral gear. And spiral gears are connecting those shafts which are neither parallel nor intersecting. So the shafts are not parallel and not intersecting. Right? So I hope these This was all? were there. Yes. Okay, okay. Let me see. There is a question of EM also. Yeah. Just stay tuned. Just give me maybe 20-30 seconds. I'll get back to you. Okay. Okay, so we are discussing now the question of engineering mechanics. If you find any discrepancy with the question data, please do let me know in the comment box. And there is one student who is saying 70 numbers. I guess it's a good good score. And एक कह रहा पता नहीं क्या होगा, जो होगा वो आ ही जाएगा सामने, तुम्हारे चाहने ना चाहने से रुकेगा नहीं. So have faith in yourself. अभी इसमें डेटा क्या था? There was this incline given. उस incline के ऊपर there is a block of mass 50 kg if I'm not wrong. It was given and it is connected with, there is a string which is connected to the center of pulley, and there is one more string which is passing over this pulley and then going over this pulley, and this pulley is somewhere fixed here, and there is at other end there is a capital mass M block is attached. Okay, what has been asked in this question, what should be the value of M so that, or what should be the minimum value of M? अगर मिनिमम आपको चाहिए तो दिस शुड बी एट वर्ज ऑफ मोशन टू मूविंग अपवर्ड्स. अगर आप उसको उससे ज्यादा करोगे तो ये नीचे जाने की टेंडेंसी आएगी. आप खुद सोच के देखिए, इफ यू गोना इंक्रीज दिस मास कैपिटल एम तो इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं. इफ यू वांट टू हैव द मिनिमम कैपिटल एम, तो मिनिमम कब आएगा? जब ये ऊपर जाने के वर्ज पे होगा. एंड इफ इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन टू मूव अप, तो इसका मतलब ये वाला केस पे वर्ज पे होगा डाउन द इंक्लाइन. एंड वर्ज ऑफ मोशन इसलिए है बच्चे क्योंकि जो फ्रिक्शन है आप उस पे क्या पुट कर सकते हो, म्यू एन पुट कर सकते हो. एंड देन लेटर ऑन आप जब वर्ज ऑफ मोशन है तो वर्ज ऑफ मोशन रेस्ट ही होता है, रेस्ट पे नेट फोर्स जीरो होता है. आप सबके फोर्सेस को क्या कर दो, जीरो कर दो. इसके ऊपर देखते हैं सबसे पहले आप परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आप क्या बोल देंगे, एन विल बी इक्वल टू एम जी cos 30. पैरेलल टू द इंक्लाइन आप क्या बोलेंगे, mg sin 30 शुड बी इक्वल टू t प्लस, t इज टेंशन आई हैव कंसिडर्ड इनटू दिस स्ट्रिंग. ठीक है, सो mg sin 30 विल बी इक्वल t प्लस म्यू एन. म्यू एन कितना है बच्चे, म्यू एन क्या होगा, म्यू इज गिवन 0.3 somewhere, yes 0.3 into n is mg cos 30. From here you can find out this tension, it would be 117.814. It's simple. But if you consider this pulley na, you can understand that if you apply t on this side, t prime, I have taken this as t prime, so you'll have to apply, or not you, the string will apply t prime on this pulley as well. And if you consider the equilibrium of this pulley, so it can be established only if your t is equal to twice of t prime. You can calculate t prime from here, t by 2, which is 58.91. Now you come to this mass.
it is so simple. If the mg would be acting in the vertical downward direction at verge of motion, t prime should be, it is typically equal to mg, but if you increase it by a little amount, it would start moving in the upward direction. But for the minimum, t prime should be equal to mg, and here just dividing this t prime with the 9.81, it would yield you the answer as 6 kg. If there is, yes, one Narendra Yadav has answered it 6 kg. So if this was the data, I guess this is the right answer. Now the next was actually, if I'm not wrong, we have discussed that question. Yeah, actually it is already discussed. This was the question I thought of considering in engineering mechanics. It has been already covered in the theory of machine. So the velocity of this point would be equal to 4.243. You can analyze it more like 45, 90 degree, and simply it would be simple. So we have calculated it. So stay tuned. Next next subject will be coming on live. Okay, wish you all the good luck to everyone. सो वेलकम टू द डिस्कशन. थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, आरएससी आईसी इंजन्स की हम बात करेंगे. एंड पेपर, सबसे पहले तो पेपर का लेवल क्या था, तो मॉडरेट कह सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस पर ऑन दी टफर साइड सर, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर इजियर. तो ओवरऑल अगर हम पेपर का लेवल बोले तो इट वाज मॉडरेट टाइप का लेवल ही लग रहा है. सारे टीचर से भी बात करिए तो वो यही कह रहे हैं. बाकी एक बार आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि पेपर का लेवल आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक्सपीरियंस है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. तो थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है. एन आइडियल गैस इज एट स्टेट 1 देन ब्रिंग टू स्टेट 2 स्टेट 3 बोथ द एंड्स 2 and 3 आर ऑन सेम आइसोथर्म, मीन सेम कुछ इस तरीके से मैं सेम टेंपरेचर डायग्राम दिखाऊं तो पीवी डायग्राम है, एंड ये सपोज एक आइसोथर्म है, पॉइंट 2 and 3 सेम टेम्परेचर. तो ये हम मजाक में भी कई बार बोलते रहते हैं, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वाई एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओनली फॉर आइडियल गैस, वाई ओनली फॉर आइडियल गैस. तो पूरे थर्मो के हर दिन हर लेक्चर के अंदर यही चलता है कि वाई इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस. लास्ट डे हम प्रूव करते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि आप में से एक भी बच्चा होगा किसी ने छोड़ा होगा. बिल्कुल सिंपल है, आइडियल गैस है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. तो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो S2 इज इक्वल टू S3. तो आंसर इज इक्वल टू T3. ओके, ठीक है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर. ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है. फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करोगे, dq इज इक्वल टू q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w. डेल डब्ल्यू. अभी सर बात करी थी आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में ये 0 हो जाएगा. करेक्ट. हीट हीट इज इक्वल टू वर्क. तो द प्रोसेस इज पॉसिबल. द प्रोसेस इज पॉसिबल. और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सेकंड लॉ, जैसे कई बच्चों को लगता है कि सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा. करेक्ट. सेकंड लॉ साइकिल के लिए होता है. साइकिल अगर कोई डिवाइस साइक्लिक डिवाइस है तो हीट का कन्वर्जन वर्क में. आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये प्रोसेस लिखा हुआ है. अब
थर्मो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर काफी कैलकुलेशंस भी है और हो सकता है कि काफी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हुई हो। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ये पावर। पावर हाँ जी, यस। सो फॉलोइंग डेटा इज गिवन। अब देखो इसमें जो डेटा आया है अलग अलग स्टूडेंट्स ने, तो कंबाइन करके हमने डेटा लिखा हुआ है। डेटा हो सकता है प्लस माइनस हो, बट ओवरऑल क्वेश्चन की थीम आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज अ कंटेनर, एक रिजिड कंटेनर है, दैट मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। 15 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, दैट इज 0.15 मीटर हम कह सकते हैं। नाउ हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई हो रही है। 80 डिग्री सेल्सियस इज द इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज 130 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि चेंज इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये गलत टाइप हो गया, द चेंज इन द हाइट ऑफ या चेंज इन द वाटर लेवल होगा, वाटर लेवल इन द सिलेंडर, चेंज इन दी वाटर लेवल। और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आपको दे रखा है। हाँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन इनिशियली दे रखा है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें वाटर लेवल की हाइट निकालनी है। तो बेसिकली लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द इनिशियल वाटर करेक्ट का लेवल, वॉल्यूम कितना है, फाइनल वाटर का वॉल्यूम कितना है, ये निकालते हैं। ठीक है, तो इफ वी सी दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम देखें V1 इक्वल टू VF प्लस x1 इंटू VG माइनस VF। VG माइनस VF। सो ये अगर हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन वैल्यू बता दो। हाँ सर, ये वैल्यूज लिखी हुई है 80 हाँ, डिग्री पे, और कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये आ जाएगा 0.145 मीटर क्यूब पर केजी। सो दिस इज दी स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनिशियल पॉइंट। हाँ, इनिशियल। अब इसमें हम अगर लिक्विड की बात करें तो वी कैन से, जैसे सपोज मुझे लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम पहले फाइनली भी निकाल लेते हैं। तो फाइनल अगर हम देखें, अगर रिजिड कंटेनर है तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, होगा, करेक्ट, क्योंकि रिजिड कंटेनर है। तो V1 हमें पता है 0.34145 इज इक्वल्स टू अगेन VF प्लस x2 VFG, VG माइनस VF। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो डेटा है, ये वाला डेटा हमें दैट इज गिवन, ये वाला डेटा है, यानी 130 डिग्री सेल्सियस वाला डेटा, ये हमें यूज करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन x2। तो x2 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, इट केम आउट टू बी 0.5104। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब अगर हम देखें, ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे पहले भी पता है, बाद में भी पता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर x1 देखोगे तो ये होगा मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, करेक्ट, राइट। और अगर मैं 1 माइनस x1 करूं तो इट इज 1 माइनस दिस mv अपॉन mv प्लस ml, तो ml अपॉन, तो यहां से ये 1 माइनस x1 बेसिकली मुझे मिल जाएगा ml अपॉन mv प्लस ml। और ये क्योंकि हम कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन 1 की बात हो रही है, x1 लिख रहे हैं, तो ml हमें पता लग जाएगा 1 माइनस, सर x1 कितना दिया है, 0.1, x1 इज 0.1, राइट, 0.1 इज इक्वल्स टू हमें ml1 पता लग जाएगा, एंड दिस इज द टोटल मास। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 के। हाँ, टोटल मास ये लिखा है डायग्राम में 5 kg। सो ये 5 kg है, ये 0.9 हो जाएगा, तो इट विल बी 4.5। हाँ, 4.5 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। ये कंडीशन 1 में लिक्विड इतना है। नाउ फाइनली अगर हम देखें 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनली अगर हम देखें इफ वी सी, इसमें स्लाइड करने के लिए ये प्रॉब्लम है तो अच्छा, इसमें यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे आप कर लीजिए सर। सो कलर चेंज कर कैलकुलेशन काफी है। हाँ, तो नाउ इफ वी सी, अच्छा ये एक बार आप लोग बताइएगा, सबने एग्जाम में किया भी होगा, तो हाउ वाज दिस प्रॉब्लम, आप इसे फाइनली सॉल्व कर पाए? देखो काफी कैलकुलेशन इसमें। अब देखो ml1 हमें पता लग गया। नाउ सिमिलरली वी नो x2 हमें पता है, तो x2 पता है, तो 1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू, सर बच्चे कर पाए थे इसको, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी रिप्लाई इसके ऊपर तो नहीं आया है, ML2 लगता है नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे हमें ना x2 पता लग गया, x2 पता लग गया तो ml2 पता लग जाएगा। ml2 की जो वैल्यू आ रही है, ये लिक्विड जो फाइनली बचेगा, इसकी वैल्यू आई है 2.448 किलोग्राम, यानी इतना लिक्विड फाइनली बचेगा। ऑब्वियसली लिक्विड का लेवल कम होगा। अब लेकिन लेवल कम होने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो मास ऑफ लिक्विड से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इनिशियली कैसे निकालेंगे? मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। लिक्विड की बात है, हाँ लिक्विड, लेकिन सर ये तो एवरेज हो जाएगा टोटल, हमें लिक्विड का देखना है। तो 0.00 आई थिंक, एक सेकेंड,
ये डेटा 0.001029. 1029 0.001029. So we will have 0.001029 ये डेटा है. यहां से VL1 आएगा, तो VL1 की जो वैल्यू मेरी आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 4.6305 है. मैं इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहा आगे. 10 to the power -3 Approximately. हाँ मीटर क्यूब. मीटर क्यूब में आ जाएगा. और इसी से आप जब निकालोगे ना VL2, तो यहाँ पे इसका लिक्विड का दे रखा है 0.001069 इंटू आप कर लेंगे 2.44 मल्टीप्लाई करोगे. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हाँ हूं. जी सर. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.6169 इंटू 10 to the power -3. अब चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखें यहां, अगर सर इसको हम फाइनली कंक्लूड कर दें, तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको चेंज इन लेवल देखना है, जैसे ये हाइट पहले थी, बाद में मान लो ये है, ये h1 है, ये h2 है, तो जो चेंज इन हाइट होगा, चेंज इन हाइट h1 माइनस h2 इनटू एरिया, करेक्ट, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2. अब बस ये ध्यान देना है, ये तो आपको इसमें गिवन है. हाँ, ये ध्यान देना है कि इसमें आई थिंक डेल्टा एच जो पूछा था, जो चेंज इन हाइट है, वो सेंटीमीटर में पूछा था, ऐसा लिखा है कुछ बच्चों ने. तो अगर हम यहां देखें सेंटीमीटर के लिए, सो h1 माइनस h2 हमें निकालना है. ये अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, मैं मान रहा हूं कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ रही है, तो इंटू 10 टू द पावर, या तो पहले से मीटर में निकाल लेते हैं. एरिया सर हमें डायमीटर दी है, तो π/4 इंटू d स्क्वायर, तो 0.15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर. और ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा. चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है 2.0136 इंटू 10 टू द पावर -3. तो सर यहाँ आंसर से ही डेल्टा एच की सर वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 114.00 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. मीटर में होगी ये वैल्यू. और इसी को आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर. तो वो ये यूनिट्स आप चेक करेंगे कि मीटर्स में आया था, सेंटीमीटर या mm के अंदर. मेथड इज दिस. और एक बार आप लोग देख लो कि ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप में था या इट वाज एस MCQ. कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अच्छा हुआ अटेम्प्ट नहीं किया. अच्छा वो अटेम्प्ट किया. टाइम वेस्ट है. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स. आईसी इंजन से कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं मिला है, पीपल आर सेइंग. और ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पावर प्लांट. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. So next we come to the power plant. If we talk about the power plant, there is one question. Question is not clear basically. इसमें options वगैरह मिले नहीं है. Question कुछ इस तरह का है कि TS diagram बनाना है for a simple Rankine cycle. अब जो फिगर दिख रहा है वो है basically regenerative cycle के लिए. ये भी क्लियर नहीं that is open or closed. तो based upon that we have to draw the TS diagram. तो सर क्या करें ऐसे क्वेश्चंस पे? बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शंस में जो रीजनरेटिव साइकिल वाला ऑप्शन नहीं था, वो सिंपल रैंकाइन साइकिल के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज का उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा था. तो आई थिंक अगर आपने ओपन रीजनरेटिव साइकिल का बारे में पढ़ रखा है क्लास के अंदर तो आपको पता ही है. इनफैक्ट उसके ऊपर इतने सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस भी कर रखे थे. तो दिस उसके टाइप ये जैसे ओपन टाइप हो गया. हाँ जी. अगर ये ओपन था, अगर that is open, that is energy as well as mass interaction take place. क्योंकि आप लोग ही बता सकते हैं कि ऑप्शंस में कैसे थे, बट हमने जितना डिस्कस करा स्टूडेंट से, ओके, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई उसके केस के अंदर ये था कि ऐसा ऑप्शन उसके अंदर नहीं था, एक सिंपल रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड था. सर तो सिंपल रैंकाइन साइकिल आप बना दीजिए एक बार. सिंपल रैंकाइन साइकिल अगर बात करें तो
अपनी सिंपल रैंकिन साइकिल आ गई। 1 से 2 pump work, then 2 to 3 constant pressure heat addition, 3 to 4 expansion in turbine, and then 4 to 1 condenser heat rejection. And some students are sending option like this also कि ऐसा ऑप्शन में है या आई थिंक इस टाइप का ऑप्शंस में है, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं। ओके, सो आई होप बच्चे बता रहे हैं सर, यस सर, सिंपल रैंकिन साइकिल इट वाज। सिंपल रैंकिन साइकिल। ओके, नो सुपर हीटिंग वाज देयर। See, we don't know about the exact question. सो आई थिंक आप लोगों ने सबने कर ही लिया होगा, तो अगर सुपर हीटिंग भी नहीं है तो फिर ये वाला साइकिल ऐसा टाइप का बन जाएगा। ओके, इस तरह का होगा अगर सुपर हीटिंग नहीं है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है पावर प्लांट से रिलेटेड टू द रेलिक फ्लो, बट एग्जैक्ट उसके बारे में किसी ने क्वेश्चन कोई भेजा नहीं है। उसके अंदर बस एक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि एक रेलिक फ्लो है, एक पाइपलाइन है जिसके अंदर एंट्री और एग्जिट कर रहा है, एक डक्ट है। ओके, और उसके केस के अंदर यहाँ पे जब एंट्री कर रहा है तो वो हाई प्रेशर के ऊपर है, ये एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे जब निकल रहा है तो लो प्रेशर पे। वो तो ऑब्वियस है, मतलब अगर अपन ये मान सकते हैं कि 1 और 2 सेक्शन ले लें तो दैट P1 इज मोर देन P2। तो एनर्जी का नेचुरल फ्लो हमेशा हाई टू लो प्रेशर ही होता है। और उसके केस के अंदर ऑप्शन यही बताया था कि किसी ने चारों ऑप्शंस नहीं आए हमारे पास में, बस ये पूछा था कि सर वेलोसिटी के रिगार्डिंग पूछा था कि वेलोसिटी का क्या होगा अलोंग द फ्लो, इट विल इंक्रीज द अलोंग द फ्लो या डिक्रीज द फ्लो। तो ऑब्वियसली अगर यही क्वेश्चन है तो प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो। ओके, नहीं पर सर इस क्वेश्चन में ना, जैसे उन्होंने रेले है तो रेले में तो हीट ट्रांसफर भी होगा, हीट ट्रांसफर भी तो होगा, उसके बाद कहानी बदल जाती है, इसलिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर है तो हीट ट्रांसफर अगर बाहर से हो रहा है, एनर्जी अपन दे रहे हैं तो साथ में वेलोसिटी और प्रेशर वो वाली भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। एक रफली ये इंफॉर्मेशन आई है कि एक पाइपलाइन है, रेलिक फ्लो हो रहा है, हाई टू लो प्रेशर जा रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी का क्या होगा। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे क्लास में डिस्कस हुए थे, रेलिक फ्लो, फैनो फ्लो, शॉक वेव्स। ओके, और आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। वाज सबसोनिक एंड डेंसिटी वाज चेंजिंग। Okay, so better we should wait for the exact question to come because we are not sure about the questions. काफी questions आए, काफी लोगों ने डाटा दिया, but realistic डाटा कुछ भी नहीं है। We are not sure about that. अब अगर जैसा कुछ बच्चे बता रहे हैं कि डेंसिटी, नो डेंसिटी पूछा था, तो अगर डेंसिटी का है तो मास फ्लो रेट रो ए वी कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लग सकती है उसके केस के अंदर। अब और अगर ये रेलिक फ्लो का है, अगर आपने ये लिखा है किसी एक स्टूडेंट ने कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है और एरिया तो कांस्टेंट वैसे ही होता है। ओके, एरिया तो वैसे ही कांस्टेंट होता है उसके केस के अंदर। तो अब इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, तो एग्जैक्ट डाटा वही हम कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं पाया था। ओके, नो डेंसिटी नहीं पूछा था, 10 पॉइंट एवरेज रफनेस का। ओके, ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने कर लिया होगा, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। वॉल्यूम फ्लो रेट वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो उसके केस के अंदर हीट का बारे में कोई बात नहीं पता चली है, तो इस वजह से ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। थैंक यू। ओके,
So good evening, my dear friends. Good evening all. Very good evening. So I hope you have done the strength of material machine design questions all correctly. So as usual, the same weightage is given. 8 questions are there from strength of material machine design. Strength of material 6 question, machine design 2 questions. Now we are going to discuss the machine design questions, then we'll come for the strength of materials. Okay, dear friend, this is the question from welded joint and he directly asked the formula. Okay, so this is simply double parallel flat weld. So there is some confusion about the data. If this length is given, so then the answer is Bombay. 0.707 H L into tau all into 2. Okay, so if this length is given in the diagram, so the answer is Bombay is correct. If this length is not mentioned in the question, my dear, listen very carefully. If this length is not mentioned, so we have to take the total length. So then we need not to multiply by this 2. So the answer is option A. So I repeat, if the length mentioned in the diagram, the option B is correct. If length is not mentioned in the question, so you have to take total length. So option A will be the right answer. Okay, my dear, very clear. Let's move to the next problem. So this is from the what helical springs. So a closed coil helical spring of mean diameter is given, wire diameter is given, subjected to a load F, and is asking the what is the maximum shear stress at the wire cross section. So due to this one, the spring wire is subjected to direct shear as well as the torsional shear stress. So direct shear stress is generally you have to multiply by the wall factor, but in this one what the curvature factor should be included. But as per the option there is no curvature factor, so we are not taking the curvature factor. So then so you have to multiply by actually Kc, curvature factor. So direct shear stress is shear force upon area. The shear force is F divided by area. Area is pi by 4 d square. And this is 16T upon torque value is what? F into D by 2, mean diameter. And curvature factor is 1. Then from this one directly the answer is option A, 4F. Option A will be the right Option A is the correct answer. So generally you have to multiply by Kc. As per the option there is no Kc is given. So then option A is the correct now. Okay, dear. So that's all from machine design subject. So let us discuss the strength of material questions. So my dear, best wishes. Okay, so let's discuss the strength of material. So once again, good evening, my dear friends. So now we are going to discuss strength of material question. There are 6 questions are there. So first question is going to be discussed Mr. Vimal sir. We have this simply supported beam, right? At point C, there is a shear stress of this 3 megapascal, and point C is situated at the neutral axis actually. So we need to find this force P. Simple question hai ye. So for this, first we need to find the reactions, right? I need to find this reaction on the left side, right? Now reaction on this side should be equal to length of this, means 3 meter divided by total length, right? 5. So it should be 3p by 5, right? Right side length is 3 meter, overall is 5. Now this will be the shear force at point C. So if I find shear stress at point C, right?
this is nothing but what I can say is shear force. And since this is the rectangular cross section, I guess, right? Rectangular Cross section is rectangular. So for rectangular cross section at neutral axis, the shear stress is 1.5 times average shear stress. That is, shear force will be this. So 3p by 5 and divided by area. Area will be 20 into it was 20 into 40 millimeter, I guess. millimeter, 20 into 40. So आप लोग मैसेज करो आप. What was the cross section? जो क्वेश्चन था पहले उसमें 20 by 40 millimeter था, I guess, right? So I'm just solving by that. 40 into 20. Change it here. हाँ, so we are considering 20 by 40. 20 by was in mm, not in centimeter, correct? ठीक है. All right. It was in mm. So we have modified this one. We are given the answers by taking the width as 20 and depth as 40 mm. Right? So stress की value given है, इसको solve करना और P की आपको value find करनी है. So after solving this, the value that we are getting is 2666. It is 2666.67 Newton. Right? I think they have not mentioned the units. Okay. So this should be the answer. Based upon the units, if the units are Newton, then it is going to be 2666.67. Otherwise, kilonewtons, it is 2.67 kilonewtons. So as per the units, you have to decide it. So we'll come for the next question. Okay, some students are saying कि जो data था that was 20 by 45 millimeter. तो उसके हिसाब से आंसर में थोड़ा चेंज आएगा, right? We have solved this by considering 20 by 40, width 20 and depth 40. If you have 45, you can take the 45, then you can do this one. हाँ, तो So we are given the numerical value based upon by taking the depth as 40 mm. If it is 45, you can complete the calculation by taking the, because based upon these are all the memory based questions, and we are given the answer based upon the whatever the calculation you have done based upon the answer data we have received it. Okay. So this is the next question. So a cantilever beam is given, subjected to constant point load and a bending couple at the free end. Now asking the SFD and BMD. So directly बोल सकते हैं reaction की भी जरूरत नहीं है. At the free end पे shear force 0 है. There is no constant point load. So directly either option A or option B. So directly ये दोनों को निकाल सकते हैं अपने. At free end there is no shear force. So C and D को eliminate कर सकते हैं. Then out of A and B, at D, bendment is non-zero. Here shear force 0 and bendment is not 0. Out of option A and B, here bendment is given as 0. Here bendment is not given non-zero. So directly can go for the answer is Bombay. So somebody can also find out the reaction. You can draw the SFD BMD. Otherwise, based upon the elimination process by using the conclusion. Here shear force 0, bendment is going to be positive. So based upon this one, option is going to be Bombay. Third question is this, right? So we need to find reaction, I guess, right? We have to find reaction at point C, and D is the internal hinge, right? Simple question hai. See, when you talk about this portion, na, AD, this is symmetrically loaded. AD is symmetrically loaded. So if I draw the free body diagram, na, for this portion I am saying, so we'll have reaction here, RC, ek RC milega. Then I will have a reaction here. One is RB. In between these two, we have a force of 25. And due to this internal hinge, I will have force 5, right? Because ये जो loading है, this is symmetric. 10 downward means 5 upward, 5 downward, 5 upward. So I need to balance this with 5 downward. This would be your loading diagram, right? We have to find RC, I guess, right? So this is point B, right? So you need to write the equation of moment. You just write sum of moment about B is equal to 0 for this member, right? And you can find the values, right? So I'm just writing the answers. 5 kilonewtons. Okay. So RC is we are getting as 5 kilonewton. Simple है. We have to find RC. So with this data जो length वगैरह given है उसके हिसाब से RC we are getting as 5 kilonewton. If you know this one, otherwise directly you can use about whatever the sir is given is correct if it's symmetric loading. Otherwise you can find out the RA by using the at internal hinge bendment is 0. If you know the RA, then directly take the sum of the moments about B. So that also you can do it now. So answer is going to be 5 kilonewton. Then option A is correct now. Once again, we are repeating all these answers we are given based on the whatever the data we have received it. So this is the next question. This is from the principal stress chapter. A square plate of dimension 1 meter and 1 meter is welded along diagonal.
ratio of the normal stress to shear stress on the plane normal to the weld. Here, if this diagram is given, can anybody confirm whether this diagram is given or not? We have received that what this diagram is given. Can you confirm it whether diagram is given or not? Anybody? एक बार आप मैसेज टाइप करो, डायग्राम गिवन था क्या, बिकॉज उसके हिसाब से आंसर में चेंज Answer change हो सकता है. Right. Minus. हाँ, so Anybody can mention it? if this was the weld na, then there will be different answer. Along this, if you have weld na, it was given. Is it correct? Same diagram. Okay. Diagram was Good, good. So then this theta is going to be now is asking normal to the weld. Then you have to take the line, straight line I'm talking about. So we have to consider now it's asking not on this plane, normal to the weld. So this angle is 90 degrees. Then this angle will be 45. So you have to find out on this one. Then theta will be either minus 45, I am considering the clockwise is positive, anti-clockwise negative. So theta is minus 45, otherwise 135. Or then directly can find out the normal stress at an angle of there is no change in the normal stress now, whether you take the plus 45 or minus 45 same now. So 1 by 2 sigma x is minus 6.5, sigma y is 25. Second term is 0 because of cos 90 is 0 and third term is 0 because there is no tau xy. So then this value you are getting 9.25. But even if somebody considers plus 45, this answer will remain same now. Then next shear stress. Minus 1 by 2 sigma x minus sigma y. Then sin 90. Sin 90 is what? Minus 1. Then this value you are getting minus now is asking what is the ratio of the normal stress to shear stress. Then answer will be 0.558 something. minus 0.587. Suppose if it is given magnitude ratio, then it will be 0.587. Mostly they might have asked the magnitude now. So if it is a magnitude ratio, the answer is 0.587. If it is not mentioned, then the ratio will be minus 0.587 because a numerical answer type question. So as per this given data, this is the answer for this question, numerical answer type. So we'll come for the next question. So this is the question from theory of failure, right? We have sigma 1, that is sigma. Change this. We'll ask this one question. Students ask this one. Is it SYS or SYT? Okay. So can you comment on this question ki jo value given tha, it was yield strength or yield shear stress? Is it SYT is given or SYS is given? Because some students have mentioned it is a SYT. We have done the calculation based upon the SYT. Right. But if somebody is given, if it is a SYS, then value will change. SYT. Mostly are writing SYT. Then it changes this one. So this is SYT. Okay. So we are given the answer based by considering this value as SYT, yield strength in tension you are considering. Right. So this is maximum distortion energy theory, right? We know theory is nothing but for 2D it is sigma 1 square plus sigma 2 square
minus sigma 1 into sigma 2, and factor of safety is also given, na? 2. Right. So this is sigma y, or we can write simply SYT divided by factor of safety, then whole square. Right. इसको simply solve करना आपको. Right. Sigma 1 is given as sigma 2 is minus 2 sigma, and SYT is given as 550. Factor of safety is 2. By solving this, we can find sigma. We are getting 103.94. 103.94 megapascal. Right. So if it is the SYT, the answer for this question is 103.94. If it is the SYF, then answer will changes now. So once again, so many times I am repeating. So this is a memory based question based upon the whatever the data we are received, we are giving the answers. Okay, we'll come for the next question. So this is from thin pressure vessel, a cylindrical pressure vessel with diameter of 2 meters. So check it is the 2 or 3 meters. We have received the data. We have done the calculation with 3 meters here. Somewhere we get 3 meter. So we are, can anybody, if you remember, can you give this now? So what was the diameter of that cylinder? Is what? It is 3 Anybody meter. can give it? 3 Is it 2 meter. meters or 3 meters? 3 meter. Someone has written 3. 3 meter. Okay. 3 meter. Because we already done the calculation with the 3 meters. Yes, yes. So our value is going to be, if the diameter is going to be 3 meters. Thickness is given 15, Young's modulus दिया था, Poisson's ratio दिया था. Then maximum allowable strain on the surface is 0.00034. Maximum allowable strain means what? Maximum strain. That is the hoop strain is given now. So indirectly here it is given as hoop strain is given and is asking the permissible pressure in kilopascals. So if you remember the hoop strain value equation now. PD by 4TE. 2 minus. That's all. Only you should know that maximum strain is nothing but the hoop strain. Now you can substitute the data directly, you will get it now. All the data is given now. 0.84 megapascal. Pressure is unknown. Diameter you are considering the 3 meters. 3000. Thickness is 15. and Young's modulus is It should be 210 gigapascal, I guess. gigapascal. यहाँ megapascal लिखा है, but in question It should be gigapascal only. It This should be gigapascal. the not typing megapascal. mistake it is. Young's modulus will be in gigapascals. Because 210 megapascal is very small value. Poisson's 0.3. ratio 3.3. Then if you can solve this one, we are getting 0.84 megapascal. 0. In kilopascal they are asking, so it should be 840. It should be 840. So if it is a megapascal, answer is 0.84. But here they have mentioned the kilopascals. Then it is 840. so once again based upon this unit, kilopascal means answer is 840, and if it is megapascal, answer is 0.84. So the weightage of strengthometer machine design, as usual, it is going to be what now 8 questions are there, both strengthometer machine design. So based upon my level, I can expect this paper is going to be moderate level is there now. But those who have attended madeeasy classes, so they might have done all these questions correctly. So thank you one and all. Wish you all the best. Thank you. All the very best. Next, we come out to for the industrial portion. If we talk about industrial, 4 questions based upon memory. Do you remember based upon memory? The 4 questions are the first one that is from EOQ model. बड़ा सिंपल सा इजी क्वेश्चन है. मेरे ख्याल सभी बच्चों ने बना लिया होगा. बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल दे दिया हुआ है.
और यहाँ पे जो होल्डिंग रेट दिया हुआ है ना पर मंथ दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, दैट CH विल बी ₹6। और फिर उसके बाद CO दिया हुआ है, तो Q स्टार निकालना है, तो Q स्टार विल बी सिंपली 2DCO अपॉन CH। सारा डाटा दिया हुआ है, आप इसमें वैल्यू रखोगे तो जो आंसर आ रहा है दैट ऑन सॉल्विंग दैट इज 1354 अप्रॉक्सीमेट, है ना, 1354 आएगा इसका आंसर, है ना। तो दैट इज बेस्ड अपॉन मेमोरी, डू रिमेंबर, अगेन एंड अगेन वी आर टेलिंग यू अबाउट दैट। The next question that is from industrial again, primal is given and we need to find out the dual, है ना। प्राइमल दिया हुआ है, इसका डुअल बनाना है। डू रिमेंबर, याद है मैंने बताया था, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 4 कंस्टेंट हैं। कंस्टेंट बदल जाएंगे वेरिएबल्स में, मान लेते हैं पहला y1, सेकंड इज y2, थर्ड इज y3, द फोर्थ वन y4। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जब डुअल में बनेंगे तो बन जाएगा मैक्सिमाइज, लेट मैक्सिमाइज w। अब यहाँ क्या प्रॉफिट कोफिशिएंट, सॉरी रिसोर्स वैल्यू, इधर का प्रॉफिट कोफिशिएंट बन जाएगा, तो दैट इज 0.4 टाइम्स y1 प्लस 0.6 टाइम्स y2 प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस 1.8 टाइम्स y4। दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 2 कांस्टेंट आएंगे, है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो उधर जाएंगे तो 2 कांस्टेंट हो जाएंगे। x1 पहला कांस्टेंट देगा, सिर्फ x1 की वैल्यू पिक करनी है, 0.5 y1, सॉरी 0.1 y1। सेकंड कांस्टेंट में देख रहा हूं आप x1 नहीं है, मतलब y2 का टर्म 0 हो जाएगा, देन प्लस 0.1 टाइम्स y3 प्लस 0.2 y4। इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये उधर हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। क्या होगा, इधर का प्रॉफिट क्वेश्चन, यहाँ का रिसोर्स वैल्यू, वो भी x1 की वैल्यू 0.07। देन अगर अपन इधर बात करें x2 की वैल्यू से सेकंड कांस्टेंट y1 का टर्म 0 हो जाएगा, तो 0.1 y2, x2 का यहाँ पे प्लस 0.2 y3, यहाँ x2 का कोफिशिएंट 0.1 है तो 0.1 y4 लेस देन इक्वल्स टू 0.05, है ना। यहाँ का प्रॉफिट क्वेश्चन, यहाँ का रिसोर्स वैल्यू, और यहाँ पे साथ में y1, y2, y3, y4 ऑल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो होपफुली सभी बच्चों ने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी इन जनवरी इज गिवन 26 फरवरी आर गिवन 500 एंड 600। तो सी डिमांड का एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे फोरकास्ट का और एक एरर का, है ना। जनवरी एंड फरवरी, मार्च की फोरकास्ट निकाल लिए। जो डिमांड दे रखी है 2 की वो है 500 एंड 650। जनवरी की फोरकास्ट नहीं दी हुई है ना, तो विल टेक D1 इक्वल्स टू F1। नाउ फोरकास्ट फॉर एनी पीरियड इज गिवन बाय फोरकास्ट फॉर द लास्ट पीरियड प्लस अल्फा टाइम्स एरर फॉर द लास्ट पीरियड। हाउ मच इज अल्फा गिवन, 0.7। पहले पीरियड के लिए एरर 0। नेक्स्ट फोरकास्ट फॉर द लास्ट पीरियड प्लस 0.7 इंटू 0, 500 आ जाएगा, एरर इज 150। नेक्स्ट फोरकास्ट विल बी 150 इंटू 0.7 प्लस 500, तो दैट कम्स आउट टू बी 605। तो 605 विल बी अवर आंसर हियर, होपफुली एवरीवन गॉट इट। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं फोरकास्ट 250 है, और तो बेटा उसी हिसाब से फिर, अच्छा फोरकास्ट 250 था फर्स्ट पीरियड के लिए, तो अगर आपने फोरकास्ट की बात करें तो फिर डाटा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आई वॉज टोल्ड दैट द फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट मंथ वॉज नॉट गिवन। तो चलिए जल्दी से बच्चे बोल रहे हैं पहले पीरियड के लिए फोरकास्ट 250 दिया हुआ था, उसके हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। तो पहले पीरियड के लिए आ गया एरर 250। अब अगर 250 एरर है तो नेक्स्ट फोरकास्ट क्या आ जाएगा, 250 इंटू 0.7 प्लस 250, 425, है ना। फिर दिया हुआ था यहाँ पे 650 माइनस ये 225 आ गया, तो उसी के हिसाब से नेक्स्ट फोरकास्ट आ जाएगा
225 into 0.7 plus 425. 582.5. So 582.5. That will be our answer. ये सही है बच्चा? ओके, जनवरी का फोरकास्ट दिया हुआ था, ठीक है, तो देखो उसी हिसाब से फिर अपन ने चेंज कर लिया तो ये फिर आंसर आ जाएगा बट बेस्ड अपॉन द डाटा. चलिए नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम पर्ट सीपीएम. मैंने क्लास में बताया था कि इस बार पर्ट सीपीएम आएगा. जब भी मैंने लिया था आपसे क्वेश्चंस तो मैंने बताया था इससे क्वेश्चन आने ही आना है. अब यहाँ पे इन्होंने 3 टाइम वैल्यूज दिया है, याद रखना. ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम्स आर गिवन. वी विल फाइंड आउट द एवरेज टाइम. एवरेज टाइम इज EO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6. तो देखिए पहले के लिए आ जाएगा 3, सेकंड के लिए 4, तीसरे के लिए 5. एंड आई हैव टेकन आउट द डाटा फॉर दैट. टाइम वैल्यूज निकाले हैं, आप निकाल सकते हैं इसके. फॉर 3 to 4 it will be 6, then 3 to 5 it will be 3, then 2 to 5 it will be 6. एवरेज टाइम निकाल लेंगे सभी का. 4 से 5 के लिए 7 आ जाएगा एंड 5 से 6 के लिए आएगा 5. देन द नेटवर्क डायग्राम. सबकी एक्सपेक्टेड टाइम वैल्यू रख देंगे. अब यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट टाइम. वैसे आप निकाल भी सकते हैं पर साफ देखें तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि लॉन्गेस्ट टाइम विल बी अलोंग दिस पाथ. क्योंकि देख रहा हूँ 6 + 7 13 ये मैक्सिमम है, बाकी तरफ इतना टाइम नहीं लग रहा. तो 4 + 6 10, 10 + 7 17 + 5 22. तो 22 विल बी अवर आंसर. यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछा हुआ है तो दैट विल बी 22. बहुत सही, बहुत सारे बच्चों के सही आए हैं. So that will be our answer 22. So that's all from the industrial based upon memory. Next coming up next solution for the next portions. Yeah, good evening students. We were able to collect about 2 questions and unfortunately this question does not have 2 options, but I'll manage. I was able to get correct option. Dekho, the incident that happened, this question is from an area called parajumbles, no sorry, close test. Close test is nothing but sentence completion. The difference between sentence completion and close test is, in sentence completion you have one sentence with a blank beneath which there are 4 options. Here one sentence के अलावा कुछ sentences है, 3-4 sentences are there. Now the incident that happened is that an animal has fallen into dash pit. We are talking about the pit for the first time. When you speak about something for the first time, it becomes indefinite. It is non-specific. So we need to use indefinite article. So A, right? A. दोनों options में A है, right? अब देखो, under animal, because we are repeating that animal we have here, and the animal is dash elephant. Elephant is a word that begins with a vowel and it gives a vowel sound. That's why it takes an. So दोनों options में an है. अब देखो, now it is not article. What we actually require is a basic conjunction called and. What does a conjunction do in a sentence? A conjunction is a word that joins 2 different words, 2 different sentences or 2 different parts of a sentence, and is required. So is an elephant. It is very surprising to see that the elephant is in pain. Okay,
is in pain and miserable. So, and is there in both of them. Till here, both are right. Now, the difference lies in the last option. एक ऑप्शन में एट है, दूसरा ऑप्शन में फर है. Okay, as it has to dash the crowd, it is in pain because it is in pit. So it is seeking the support from the people. It wants somebody to pick it out of the pit, right? Because it is in pain, miserable condition. So it is not suitable. It is not looking at the crowd. It is looking for the crowd to support them, right? It is in the pit. How can it look at the people? And there is no, the purpose will not be served if it just looks at it. It is looking for the people to support it, come out. That's why fur is obviously a better choice. So answer is B. Answer is B. Now look at the next sentence. Next question. This question is again from the sentence completion and there are two blanks. The team dashed 250 runs in 20 overs, dash the rainy day. Now what is the subject here? Team. What is team? Third person singular equivalent to it. If it is equivalent to it, if the sentence has to be in simple present tense, first form of the verb, यहाँ s होना चाहिए. Okay, it works, it shows, it proves, it scores. यहाँ s नहीं है इसीलिए गलत है. अब देखो B और C में common point क्या है फर्स्ट ब्लैंक के लिए? Fourth form of the verb है. How can you directly write fourth form of the verb after the subject? It is not possible. It requires the support of helping verb. It is scoring. जैसे कुछ helping verb का support होना चाहिए, यहाँ helping verb is नहीं is या was नहीं है, इसीलिए B और C भी गलत है. So जो बचा वो आंसर है. So what is left is the answer. यहाँ देखो, we are talking about an incident that is already over. Simple past. The team scored. It is in simple past tense. The team scored 250 runs. Despite the rainy day, the weather was not so conducive, it was not so convenient. Even though the weather was not good, it was raining, the team was able to run 250 runs out of 20 overs. That is the answer, right? So answer is A. Hope you have written the exam well. Please wait for the next subject's explanation. Good luck, dear kids. Good evening, students. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हाउ वाज द एग्जाम? यार आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह नहीं भेजे है ना? वी हैव रिसीव्ड ओनली 2 क्वेश्चंस. We have 2 questions, memory based questions, but reasoning after it is very simple. People are telling, but we don't get all the questions. We got only 2 questions. And almost you have done similar to in the classroom. So very first question, it's like part of reasoning. Part of reasoning. You do Right. See, they given first row, second row, third row, fourth row. Just only common sense. Here you do not have anything to simplify. Triangle and dot, it is in the first row, it is in third row. When you come to second figure, coming to second row, coming to last row. When you come to third diagram, it is coming to third row, from fourth row to, it has gone to first row. back again from here till here. See, Back. It is coming like this. So it's done. I hope everybody would have managed it. See, this is the third row, first row. Coming to second row, coming to last row. I hope everybody would have managed it. This is coming to here. Again, it is coming back to fourth row.
See, triangle coming to fourth row. Where is the fourth row? Only under C part. Sure. So this come to will be second row. So automatically C is the answer. लॉगरिथम का सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ हियर दिस इज Log. log x on the base of 2. This is log x on the base of 2 power half. तो जो हाफ है ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2. So we have here log x on the base of 2. It will become 2 log x on the base of 2. This is 1 log x. This is 2 log x. Will become 3 log x on base of 2 should be equal to 40. 48 log x on the base of 2 is equal to 48 by 3, which is equal to 16. Now understand one thing, if a to the power b is equal to c, b log a is equal to log c, b is equal to log c by log a. Log c by log a will mean log c on the base of a. Log c by log a will become log c on the base of a. Log c by log a will become log c on the base of a. So ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, x is equal to 2 power 16. One more very simple way was there. I'm not aware whether it was an NAT one or not. We could have substituted here Pro answers. Pro options. through options. अगर ये question by any chance if it was not an NAT one, options were there. Log x को रखेंगे 2 power 16. So put values X is equal to 2 power 16. So यहाँ पे क्या होगा? Log on the base of 2 power 16 will only become 16. And here it is 2 log 2 power 16 on the base of 2 will become 2 into 16. 2 into 16, that is 16 plus 32 should be equal to 48. So option से भी हो सकता था. If it's an NAT one, here is the method. So I hope these two questions we have. एक और question है, उसमें थोड़ा सा information है. Sitting on that. हाँ, उसमें कुछ ढंग से information आप लोग provide नहीं कर पा रहे. Seating arrangement based puzzle. But most of the questions are very simple, and this also we are in the similar to workbook. We have done in the miscellaneous values of x. If you have any other questions, please send to us. I hope all done well. Thank you so much. Rise higher, shine brighter. All the best, guys.
Yes, friends, good evening. We are here taking up the questions that have come in the GATE today on material science as well as metal cutting. So, from material science subject or engineering materials topic, only one question had come, and that question is displayed here. The question is asking about calculation of the atomic radius of an FCC element. Its density is given as 2.71 grams per centimeter cube. Atomic weight is given as 26.98 grams per mole. Avogadro's number is given, and we are asked to calculate the atomic radius in nanometers. Now, as we look into this particular question, we know that the calculation procedure is talking about only the volume density formula. So, if you try to look into the solution proceeds like this. The volume density is given by a simple formula, average number of atoms into atomic weight divided by Avogadro's number 6.023 into 10 power 23 into volume of the unit cell. Now, since it is given that it is an FCC metal, volume will be 4R by root 2 whole cube. This is the formula for calculation of the density. Now, in this particular formula, let us try to see what type of information is known to us. Density is given here as 2.71 grams per centimeter cube, and since it is given as the FCC metal, for FCC metal the average number of atoms is 4 and atomic weight is given as 26.98 grams per mole divided by Avogadro's number 6.023 into 10 power 23 into 4R by root 2 whole cube. R is the atomic radius for this particular metal that we are asked to find out. Now, when you try to calculate the value of atomic radius from this particular expression, the atomic radius will come out to be, let us say, 0.00, yeah, I am giving you here, R cube will come out to be 0.292159 into 10 to the power of minus 2. This will be in terms of centimeter cube, right? Now, let me give you the further information over here, that is, so 0.292159 in 10 power minus 23, it will come out to be here. Let me give you the value in detail. This will come out to be 0.292159 into 10 power minus 23 centimeter cube. But we are asked to report in terms of nanometers, and we know a centimeter can be converted into nanometers as 1 centimeter is equal to 10 to the power of 7 nanometers. Now, using this conversion factor, when we take the conversion for this will be the value of R cube. Now, this gives you the value of R as 0.1429 nanometers, 1429 nanometers. Now, it is going to be, this is after multiplication with 10 to the power of 7 whole cubed nanometer cubed. That is the answer, final answer that we are going to get, 0.1429 nanometers. It's a simple question. There is no need of any worry. I have been all the time insisting that in competitive examinations, this accommodating the conversion factor can become a deciding element in respect of getting the correct answer. So, most of our students who have attended the classroom program and also online program of madeeasy must have done this particular question comfortably and very, very successfully, because it was also a part and parcel of our instructional material. Now, let us try to see the next questions that have come from metal cutting theory. As we look into this question that came from metal cutting theory, it is the question given on orthogonal turning by using a single point cutting tool. Feed rate is given. Feed rate is given here,
as 0.24 millimeters per revolution. Uncut chip thickness is given as 0.23 millimeters. Shear angle is given, and tangential cutting force component, radial cutting force components are given as 800 newtons and 150 newtons respectively. We are asked to find out shear force. Now, you know, from merchant circle analysis, there is the direct formula for calculation of shear force based on this particular data. The shear force calculation formula based on merchant circle analysis is that it is Fc cos theta minus Ft sin theta, and bear always in mind that in merchant circle analysis there are only two force components that are present. The one which is called as the cutting force Fc is always the tangential force component, and Ft, whatever we are taking up here, it is either the radial force component or the axial force component depending upon the description in the problem. So no need of any worry. Axial tangential force component as well as the thrust force components are the two mutually perpendicular force components. And incidentally, based on our learning in the classroom, without any confusion, you can directly substitute the data here. The tangential cutting force is given as 800 newtons and shear angle is given as 20 degrees. Thrust force or the radial force component is given as 150 newtons and shear angle is 20 degrees. Therefore, once you make this particular calculation, you will get the answer as 700.451 newtons. This will be the correct answer for this particular question, and I am sure that this particular problem is is one of the simplest problems that were worked out in our madeeasy institute, and all the students who ever have taken up online classes or offline classes must have been very comfortable in solving this question in the GATE examination today, and they must have enjoyed it. So let me take up the subsequent question from metal cutting theory. This is that question. In a drilling operation, 50 through holes are produced from a sheet at 200 rpm and 60 holes are produced at 300 rpm. Find the value of tool life exponent. I have been insisting, I have been telling in the class that this question from drilling operation is very important. As expected, same question has come. And one more, several of our students have done this in the class and therefore they might have taken it up very correctly. Now, how do you proceed with the solution for this? In drilling operation, I have given you this formula also. In drilling operation, Taylor's tool life equation gets converted into N1 T1 power N is equal to N2 T2 to the power of N. In this particular expression, let us try to understand that we are not writing V into V1 T1. The reason is V is the cutting speed, N is the spindle speed in RPM. And what is the data that is given? Data given is in terms of RPM. Therefore, we cannot use directly as V1 T1 power N equal to V2 T to the power of N. Instead, it would get translated into N1 T1 power N is equal to N2 T to the power of N. Then, N1, N2 happen to be the two RPMs that are given here. One RPM is 200 RPM, another RPM is 300 RPM. N1 is 200, N2 is 300 RPM. What about T1, T2? The T1 and T2 stands for the tool life in drilling operation. Then how do you write for tool life in drilling operation? We all know tool life in drilling operation is having a special type of understanding. Tool life in drilling operation is given as number of holes drilled into machining time for each hole, L by S into N. This L by S into N gives you machining time for each hole, and its multiplicand is number of holes drilled. So this product, number of holes drilled into machining time for each hole, gives us what is called as the tool life. Therefore, this type of substitution should be done at T1 and at T2. Now let us examine with the data that is given to us here. Let us try to substitute N1 into T1. N1 is 200 RPM. So I write here 200 RPM into T1. T1 happens to be number of holes drilled at 200 RPM, that is 150 holes into L divided by S into RPM is 200 RPM. All that raised to the power of N
is equal to N2 into, what is the second RPM? 300 RPM. So 300 RPM into, that is the N2 into T2. T2 has to be again written as number of holes drilled into L by Sn. Number of holes drilled is 60. Therefore, we write here 60 holes drilled into, machining time for each hole is L by S into N. N is the RPM of the spindle. All that raised to the power of N. Now, when you look at this particular expression, we understand that from both the sides, L by S to the power of N, L by S to the power of N can be cut off. And therefore, when you examine this expression, the only unknown is N. Now, when you go for simplification of this expression and calculating the value of N, how do we actually obtain this? We are going to get this as, say, let's say, intermediate step is also being written. 0.75 to the power of N is equal to something like 1.5 into 0.2 raised to the power of N. Now, how do we proceed for solution? Bring all N terms to one side, take logarithm on both the sides and then solve it. That is how you proceed forward. When you solve it, this gives you the value of N as log of 1.5 to the base E divided by log of 3.75 to the base E. Take logarithm on both the sides. This gives you the value of N. This N will be giving you answer as 0.3067. That will be the answer for Taylor's two life exponent. Friends, you have solved several such questions in the class, in madeeasy, in online as well as in offline, and I am sure all madeeasy students must have enjoyed these the questions that have come from metal cutting as well as material science, and therefore my hearty congratulations to all our students, and then my hearty congratulations to all other students who have solved it correctly and enthusiastically. Wish you all the best. The next subject presentations follow now. Yeah, good evening, friends. I think in manufacturing, we will discuss some of the questions which are asked in GATE, this 27 GATE examination. And most of the students are saying production questions are not there. Production questions are there. Around 8 questions are there in production. Okay, productions questions are there. Metal cutting has given 2 questions. Machine tools में दिया question, metrology में भी है. No. Rapid prototyping में क्वेश्चन है, casting में क्वेश्चन है, and we can say that deep drawing में भी क्वेश्चन है. Okay, so 8 questions are there in production. Right, one question maybe 1 or 2 questions may be less even compared to last year. ठीक है? Right. Now we will see this question with respect to deep drawing. In deep drawing operation of rectangular sheet metal, 30% stretching in length is 15% reduction in thickness. Assume volume to be constant. The normal anisotropy of the sheet metal is given. Is asking to determine. Okay, so first he has given length direction. We can say in length direction, if you consider length direction, right? What is the strain we need to find out here? So to find out the strain, we will consider when true strain will be actually length direction will be equal to ln final length to initial length. Final length to initial length we will consider. Okay, na? So this is right true strain in length direction. Is saying that 30% is stretching. Is stretching the sheet metal by 30%. So what we can say, final length will be equal to 1.3 times of initial length.
1.3 times of initial length. So if you substitute this one, ln 1.3 times of L naught by L naught. Okay. So L naught will be getting cancelled. Ln 1.3 we can calculate here. So this is comes out to be ln 1.3 will be equal to 0.2623. 0.2623 we can consider. That is along the length direction. Next, along this thickness direction we can consider. Thickness direction is saying that it is reducing the thickness. So thickness direction ln, you can say final thickness by initial thickness is saying that 15% reduction in thickness is there. So I can say final thickness TF will be equal to 0.85 times of initial thickness we will consider. So if you substitute this one, ln 0.85 times of initial thickness by initial thickness. So we will consider this value, and if ln 0.85 you consider, this will be comes out to be minus 0.1625. What is the meaning of minus here? It is a compressive strain, because thickness reduction hota hai na, it is a compressive strain we can consider. So in that volume is right, volume to be constant here. If you are putting volume is constant, volumetric strain will be equal to what? 0. So the strain in length direction plus strain in width direction plus strain in thickness direction will be equal to 0. Now if you want to find out what length here, 0.2623 plus strain in width direction minus 0.1625, it will be equal to 0. So from here, what is the value of strain in width direction? If you simplify this one, strain in width direction is equal to minus 0.090988 we are going to get. This is the width direction. So he is asking normal anisotropy. So to calculate the normal anisotropy, right, the value is given by generally R. Normal isotropy value R will be equal to strain in width direction by strain in thickness direction. Strain in width direction is minus 0.0988 by strain in thickness direction is minus 0.1625. So if you are simplifying this sum, it will be comes out to be 0.608. So I can say 0.61. So if you are getting 0.61 will be less than 1, means reducing the thickness will be difficult in this particular sheet metal. So deep drawing is difficult using this particular sheet material. That is the meaning. So answer is 0.61. So this is the question which has given deep drawing. Casting also the question has given, friends. Match the following type of question has given in casting also. So that is given what is called dross. So match the following question. Dross means a metal oxide part. So when the liquid metal is entered into this, dross means we can say metal oxide formation is then he has given, friends, one definition. Here carries a gas defect. A shallow blow which is formed on the surface of the casting is called what? Scare. Next we can have a swell. Swell is also a defect which is formed on the surface due to improper ramming. Hardness of this mold will be less. On the surface there is a chance of expansion of the cavity will be there. Size of the casting will be getting increased. It is called what? Swell. And we can have a scab also. One more defect is called scab. A rough surface of the casting which is formed on the top surface. Right? A surface of the casting which is formed on the surface. A rough surface can be formed on the top of the casting. It is called what? Scab. So this is given in the form of match the following. So we have not received a correct exact question. That's why I am not representing this one. But one question is there in the casting with respect to defect. This is a question related to debowing. So remaining questions, Gunjan sir will continue in manufacturing.
So look at this question. This is a question from milling. So in this milling operation, no, it's a question basically from jigs and fixtures. Okay, so it says for the milling operation, the suitable value of height for fixture H is. Okay, now look at this. This is the fixture height. This is the fixture height totally. Okay, and this is 205. This is 205. Now, when you look at this particular height here, and look at this 205. 205 is the workpiece depth, right? This is the workpiece depth, and the cutter needs to cut along this entire body, right? This is 205. Now, this is 100. What we need to be ensure is that the cutter must not touch the fixture. There has to be some kind of clearance. Okay, so when you look at body, it has to be greater than. If I talk about the fixture height, it has to be the depth of machining plus clearance. So depth of machining plus clearance comes out to be, depth of machining is 205. If I add any clearance, that is x. So there is only one option which is greater than 205, and that is 210. So this is the basic understanding that the cutter must not touch the fixture. So if the cutter, the workpiece is totally 205 and the fixture is at the bottom, so fixture नीचे होता है और ये इतना सा काटेगा, है ना, 205 काटेगा, तो अब हम 205 के साथ थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ेंगे, तो इसलिए 210 के साथ हम जाएंगे. फिर आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो. अब यहाँ पर पूछा है एवरेज रफनेस वैल्यू. ठीक है, बहुत सारा बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होता है क्योंकि दो एवरेज होता है. एक होता है एवरेज ओवर डेफिनेट ऑर्डिनेट्स, एक होता है एवरेज सेंटर लाइन एवरेज. ठीक है, अगर सेंटर लाइन एवरेज का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ पीक प्लस समेशन ऑफ वैली डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे. ठीक है, एक तो ये आंसर हो जाएगा. अगर एवरेज ओवर डेफिनेट ऑर्डिनेट्स है तो समेशन ऑफ पीक माइनस समेशन ऑफ वैली डिवाइड बाय 5 कर देंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज ओवर डेफिनेट ऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं एवरेज सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू. तो यहां से आपको लगभग 4.57 का आंसर आएगा, इधर से लगभग 4.59 का आंसर आएगा. तो दोनों ऑलमोस्ट आसपास है. ठीक है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आया वो देख लेना. अगर सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू है तो जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे. अगर एवरेज ओवर डेफिनेट ऑर्डिनेट्स है तो हम पीक और वैली को सब्ट्रैक्ट करके समेशन ऑफ पीक माइनस समेशन ऑफ वैली डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा. तो दोनों लगभग आंसर एक जैसा ही आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं. आप इसको 4.5 ले सकते हो अगर आपको 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है. ठीक है, या 4.6 ले सकते हैं. और कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ये देखो. इसमें भी बहुत सारा बच्चे लोग को डाउट होगा कि सर ये स्टीरियोलिथोग्राफी है, इसमें देखो फाइल एरर है ना, स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल एरर है. अभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये डिपोजिशन होता है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, तो हो सकता है स्टेयरकेस अपीयरेंस मे बी वन ऑफ द एरर. लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल एरर. तो जो सबसे कॉमन एरर होता है ना, सबसे कॉमन एरर वो होता है कि जब मेरा ट्राइंगल, आपको पता है कि हम STL क्यों बोलते हैं, स्टैंडर्ड ट्राइंगुलेशन लैंग्वेज है ना, तो इसको बोलते हैं फेसेट, यानी कि फेस. कौन सा फेस, ट्राइंगुलर फेस है ना. तो एक फेस का सबसे मिनिमम, एक प्लेन का सबसे मिनिमम एरिया क्या हो सकता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, अभी आप ये समझो कि इस पूरे बॉडी में, सॉलिड बॉडी में अगर कोई भी एक ट्राइंगल मिसिंग है, मतलब ये मिसिंग है, तो मिसिंग ट्राइंगल का मतलब मिसिंग फेसेट. और अगर ये फेस मिस होता है, मतलब ट्राइंगल एक कनेक्टेड होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कनेक्टेड होना चाहिए. अगर कोई ट्राइंगल नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिंगल ट्राइंगल, वी कॉल दैट एज मिसिंग फेस या मिसिंग फेसेट. तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, दैट मींस द बॉडी इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड. बीच में क्या है, होल या गैप है. देयर आर सम होल्स और गैप्स. सो व्हाट वी वांट फॉर स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के लिए अपने को क्या चाहिए, स्लाइसिंग के लिए अपने को एक सॉलिड बॉडी चाहिए, जिसको बोलते हैं पूरा क्लोजली पैक्ड सॉलिड बॉडी चाहिए. लेकिन यहां पर अगर कोई ना कोई ट्राइंगल मिस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, होल्स या गैप क्रिएट होगा. एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन एरर इन स्टीरियोलिथोग्राफी, राइट.
तो दिस इज द आंसर। यहां पर स्टेयर केस अपीयरेंस नहीं होगा क्योंकि ये एक सरफेस फिनिश का एरर होगा। इट इज अ सरफेस एरर, इट इज अ सरफेस एरर, राइट, नॉट द फाइल एरर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। Okay, everyone. Now let us have a very brief discussion on the fluid mechanics questions as in GATE 2026 mechanical engineering paper. You must know this particular fact that whatever questions we have got from the sources that the students have told us, so to the best possible of our knowledge, we have taken out the solution for those particular question. So students have shared 3 questions of fluid mechanics, and they are saying there was one more question whose data I was not able to fetch that data, but once the data comes, definitely I am going to share that solution with you also. So there are 3 questions of 1 or 2 marks, something like that. So the first question, and the beauty about the fact is that all the questions were from class notes. So students are saying that this year the mechanical paper, the level was a bit difficult, but hopefully in fluid mechanics part of the paper, you wouldn't have felt any trouble whatsoever, right? So the first question that was there, I'm going to discuss with you. In the question, he was saying that there was a bend in horizontal plane. So there was a bend in horizontal plane, right? So there was a bend something like this, and this was the inner side of the bend, and this is the outer side of the bend. This is the outer side of the bend, right? In the question, he was saying that the pressure on the inner side of the bend is Pi and outer side of the bend is PO. So this was given in this particular question. Now, how many of you remember that in vortex motion, the chapter with the name vortex motion, we have a very brief discussion about that a pipe bend is a free vortex motion. A pipe bend, if I'm talking about, it is basically, my dear students, it is a free vortex motion. It is a case of free vortex motion. This variety of question has also been asked in engineering services examination also. If you remember, in our classroom we have a very brief discussion on on the outer side of the bend the velocity is going to decrease, because if you're talking about free vortex motion, then the governing equation becomes Vr equal to constant, so the velocity is going to be constant by r, so the velocity is inversely proportional to radius, right? तो जैसे जैसे from the inner side of the bend, when we move towards the outer side of the bend, the radius will keep on increasing and the velocity will keep on increasing, and as it is a free vortex motion, we can apply the Bernoulli's equation here, the classical Bernoulli's equation I'm talking about, right? So we can also apply the classical Bernoulli's equation. So the velocity is less on the outer side and higher on the inner side. That's why the pressure is going to be higher on the outer side and lesser on the inner side. So there were 4 options, like PO is greater than PI, or PO is less than PI, or PO is equal to PI, or something like that. Then what is going to be my answer to this particular question? PO is greater than PI. So this was the answer to this particular question. If you remember, in our classroom we studied that in the outer portion of the pipe bend, the streamlines, they diverge a bit, because the distance between 2 streamlines, they are inversely proportional to velocity, na? We always study. So they diverge, but on the inner side of the bend, they come closer to each other, they converge with each other, because they come closer to each other because the velocity will increase and the distance between the streamline is inversely proportional to the velocity. So the data which was provided to me, the answer to this question is PO is greater than PI.
Another very important question that has been asked, same exact same statements you will find in your register, fluid dynamics, unit number 4. यूनिट नंबर 4 में, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर का तीसरा पन्ना जाकर खोल लेना। तीसरे पेज में आपके नोट्स में नीचे की तरफ 2 पॉइंट्स लिखे हैं और वही गेट 2026 में सवाल पूछा है। और आपको याद होगा क्लास के अंदर उस पॉइंट पे स्टार मार्क करवाया जाता है आपको, राइट। तो दूसरा जो सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि बर्नौलीज इक्वेशन कांट बी अप्लाइड। Please remember this fact, because the students have shared, they are not asking can be applied, they are asking can't be applied. कहाँ नहीं लग सकता है, can't be applied between any 2 points or something like that was the question, right? So I will tell you what were the options to refresh your memory. Inviscid, steady, rotational, irrotational he was talking about. So the question was something like this: if there are 2 streamlines and if it is a irrotational flow, my dear students, then for an irrotational flow, you know that the Bernoulli constant for both the streamlines is going to be same. So in case of an irrotational flow, you can apply Bernoulli's equation between any 2 points on the same streamline as well as between 2 points on different streamlines, right? But the answer to this particular question was, because he is asking can't be applied, right? So rotational flow. So when we are talking about rotational flow, then the Bernoulli's constant are not same for the 2 streamlines. That's why in case of a rotational flow, you cannot apply Bernoulli's equation between 2 points on 2 different streamlines, So I think the data which was shared to me with the students, the correct option was D, Delhi. I'm really not knowing that what were the options, but it was something like this. Some question was asked something like this. Okay, so this was also an easy question. The third question that students have shared with me is that of pressure measurement. Again, a very simple question. So this is what I'm saying. This year, the fluid mechanics portion wouldn't have troubled you, and definitely it was a scoring topic. It was a scoring topic in the paper. So it was a numerical. I'm sharing the data with you that what was the numerical was there. So there was a chamber something like this, right? There was a chamber something like this, and above this chamber there was a pressure gauge which was attached to this particular chamber. And my dear students, here some kind of an inclined tube was there, and there was a piston. There was a piston somewhere here, and the mass of the piston was given in the question. It was given to be as 500 kg was the mass of the piston. The diameter of the piston was given to be as 30 centimeter, and he was saying in the question, take acceleration due to gravity as 10 meter per second square, right bacha? Yes. So he was asking in the question that this piston, above this piston, you are applying 500 kg of mass, something like that, right, above this piston, and you have to calculate that what is the gauge pressure of the gas or the liquid which was there in this chamber, right? So let us make a free body diagram of the piston. Everybody knows if the piston, and an angle was also given. So angle that was given in the question is 60 degree, if I am not wrong. Whatever you have shared with me, it is 60 degree. तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होगा? यहाँ पर मिस्टेक ये होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट 500 के कारण फोर्स क्रिएट होगा पिस्टन के ऊपर. देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स क्रिएटेड ओवर द पिस्टन, बट the thing is that complete 500 is not going to create because pressure force is always normal to the surface. So you have to take the normal component of this weight, right? Because m into g, or the weight of this, is going to act in vertically downward direction. That is not going to act like this, normal to the surface. So you have to take the component of it normal to the surface, and that is going to be mg sine theta. So mg sine theta is acting over the piston from here,
and whatever is the pressure of this particular gas, whatever is the pressure of this particular gas is going to apply over the piston, something like this. So that is going to be pressure multiplied by area, is going to be the force over the piston like this. Okay, bacha? So you need to balance both of them. See, this pressure that you are finding out is going to be gauge pressure directly, because you are not considering the atmospheric pressure, na? PATM, you need the gauge reading, right? So you need the gauge reading PATM multiplied by the area. So what is going to be the gauge reading? The gauge reading is going to be P minus PATM. So therefore you need to find gauge. So that's why there are two methods. PATM को आप दूसरे साइड ले जाओ, या फिर PATM को रेफरेंस मान लो 0, खत्म करो उसका खेल. डायरेक्ट यू विल गेट द रीडिंग इन गेज. तो इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज P इंटू एरिया इज इक्वल टू mg साइन थीटा. सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इधर P का जो वैल्यू है वो आएगा 500 इंटू 10 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय एरिया, एंड एरिया ऑफ द पिस्टन इज पाई बाय 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर. So according to me, the pressure is going to be 61258.76 Pascal, and he was asking in kilopascal. So 61.258 kilopascal. So the answer should be in this particular range. So a nice problem. Just you need to remember some basics, right? So these are the 3 questions which I have got from the student community that were asked in the mechanical engineering paper of GATE 2026. I hope your paper went very well. And let me tell you this thing, beta. पेपर हो गया ना अब, तो अब पेपर के बारे में चर्चाएं और डिस्कशंस करके, टाइम वेस्ट करके, स्ट्रेस लेकर कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब था, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, वो सब अब छोड़ दो. तीर कमान से निकल चुका है. हमें लाइफ में केवल उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है. और आज जब आप पेपर देकर आ चुके हो, एग्जाम हॉल से बाहर निकल चुके हो, आप अपना कर्म कर चुके हो. और जब आप अपना कर्म कर चुके हो तो अब फालतू में स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है. जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी रैंक आएगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे हम, क्योंकि हम ही ने पेपर दिया है, मेहनत से दिया है. जो भी रैंक आएगी, जो भी आपका गेट स्कोर आएगा, उसके बाद आप कांटेक्ट करिए अपने टीचर्स से. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू कि आपके गेट स्कोर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज, कौन सा एमटेक कोर्स, कौन सा पीएसयू आपको मिल सकता है, राइट. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, गेट का पेपर हो चुका है, लेकिन आप जानते हो जो बीत गया उसे छोड़ो, आगे की सोचो. अगला पेपर कौन सा है? अगला पेपर बार्क का पेपर है. बार्क का रिटन एग्जाम होना है मैकेनिकल वालों का. नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी रहती हैं बार्क में, स्टाइपेंड बढ़ चुका है, राइट. तो अगला फोकस आपका बार्क के पेपर पे होना चाहिए. एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पेपर आता है वो बिल्कुल गेट के ही समानांतर स्तर पे पेपर आता है. सो यू द नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचो, और ऐसे आप टारगेट बाय टारगेट आगे बढ़ते चले जाओ. आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, बीच में ब्रेक नहीं आने देना है अपनी प्रिपरेशन में, और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट हम रखते चलेंगे जब तक हमारे हाथ में एक जॉब का ऑफर लेटर नहीं आ सकता, राइट. चलो, कुछ भी और डाउट हो तो यू फील फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, नमस्कारम.